what's the most expensive thing you won? डिग्री यार मतलब 5 साल ले ली like but time is money. My next question was, what's the most useless thing you won? Oh, my degree. But what's the weirdest prompt you What's put? the weirdest prompt you've given on ChatGPT? So what was the prompt? I don't remember, but मेरे दिमाग में ये अब हो रहा है तो अब बोल रहा हूँ exact मतलब याद नहीं। using ChatGPT line मारने के लिए हाँ basically. एक ये हो सकता है दूसरा ये मतलब Did that work? it works. I haven't seen it in a long time. I have one question to you. आपने 2 States देखा है? हाँ, of course. हाँ उसमें मेन एक्टर का नाम क्या था? अर्जुन कपूर उसके जैसा दिखता हाँ है दिखता है ना? हाँ। आलिया भट्ट कौन है? I've heard. Welcome to the Chill Hour episode. We've got 2 very interesting guests with us today. We've got Harshil Karia from Shebang and Level, and we've got Aayush Anand from Level.game. Welcome, guys. Welcome to the Chill Hour episode. How are you guys feeling? Good. We are feeling good. Yeah. It's Ayush's birthday tomorrow, Wow. so I'm excited. Yeah. Interesting. So, long day at. Birthday wishes in advance, Ayush. Thanks. It's a nice Saturday we spent together at. We call ourselves Level Supermind now. Level Supermind, yeah. So we spent a good day together, and Yeah. it's good. Now we're wrapping up the week with you. So we're taking the conversation to the next level. Yes. Yes. Fantastic. So Harshil, we'll start with you. One of the memes that's been trending Huh. on the internet. Exactly that. And you've been at the receiving end of it. So we'll put some supers, some context here. Share with the audience how was it, what was it like, and So, why did you share that particular meme on your reel at that very moment? Because so when the reel started, when the meme started to take shape, Yeah, and Ranveer's nodding away and yeah, he's doing his thing. I knew it was the episode that he and I had recorded Right. because that was his second Hindi episode हाँ. on the Hindi podcast. So You're I was, comfortable with Hindi and English both? हाँ दोनों. बढ़िया, ठीक है. तो फिर it was the second हिंदी episode और opposite end पे मैं था. हाँ. तो मुझे पता था कि वो मैं ही हूँ, लेकिन मतलब वो मेरा एपिसोड ही है, लेकिन किसी ने वो क्लिप उठा के रणवीर का मीम बना दिया था. Correct. So I saw When did you that come across it for the first time? it was about, Apart from the shoot, obviously. it was I think 2 weeks before it really blew up. Okay. So 2 weeks before it really blew up, it started to It was there on Twitter, like it's all over on Twitter. Yeah, so the first time where it started going out on Twitter, somebody sent it to me. And I was like, yeah, I know which episode this is. So I was like waiting. और फिर काफी blow up हो गया, means as a car dash and like different scenarios में, और मजा आ गया. I loved the way Ranveer also did his spoof reel Yeah. on it, which is was quite sporting of him, the way he's handled the whole thing, Yeah. and it was amazing I actually. think he's been good with handling such trolling, yeah. so to say. क्या आप भूत में believe करते हो? That kind of stuff. So it was good, and फिर मुझे लगा कि आखिर में मुझे लगा ही देना चाहिए कि कहाँ से. हाँ नहीं, people should not make a meme out of me, but आखिर में डाल ही देता हूँ कि कहाँ से निकला ये, तो फिर डाल दिया, मजा आ गया. Fantastic. Ayush, what's been up? क्या चल रहा है? सही है काम चल रहा है. We had a long day. Yeah. But excited. Let's see. What's the age gap between both of you? 10 years. 10 years. Yeah. Your story is pretty interesting, dude. Like 11 years. 11 years. 11. 10. Depends. He's turning a year older tomorrow. So मतलब हम लोग एक कॉलेज में गए थे बात करने के लिए, तो आयुष बोलता है सुन लो, बूढ़े की बात भी सुन लो, बच्चे की बात भी सुन लो. It's on you, आपको जहाँ से जो ज्ञान लेना है, आपसे जो resonate करे. Fantastic. So your story is pretty interesting, dude. Like I was reading about your story, and you'd applied as an intern. You'd written to him. I think was it a cold email or a cold DM? Cold Insta DM. Cold I'm Insta not active on DM. Insta, but फिर भी like. I saw 2 posts. Yeah. It had to Of which happen. one reel is why they selected you as a co-founder. So pretty much. Not very active there. Yeah.
How does it feel, man? You're in the content game, but you're not, as a founder, you're not active on Instagram. Does it, has your team told you कि यार आयुष क्या कर रहे हो भाई? यार बहुत why don't you बोलते हैं। leverage your personal brand? बहुत बहुत बोलते हैं, मतलब क्यों मेरे को नहीं तो मानते हो काफ़ी मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी आता है, अरे इतना पास है सोशल मीडिया के अराउंड, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट। मेरे को अंदर से एक फील है। हाँ। पहले तो मैं दिल का सुनता हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत तो बढ़िया। अभी मेरा दिल बोल रहा है कि पहले और डेप्थ ले लो, क्योंकि बट वो डेप्थ का भी लिमिट नहीं है ना, कब हाँ तक, मतलब when do you know that you've reached the depth? जब मेरे शब्द और क्लीन हो जाएंगे मुझे पता चल जाएगा। आई अच्छा। थिंक एक है इंसाइट और इंट्यूशन जहाँ हाँ। पे टाइमिंग मुझे चमकने लगता है, ठीक है। अभी मुझे मतलब आई रियली वांट टू नो, आई रियली वांट बी सब्जेक्ट मैटर जो भी मेरा है, जो मेरे को इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा और डेप्थ। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, ठीक है, एंड अभी मेरे पास बता दो कहाँ से किया, वो बता, जनता को बता दो। मैं आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT Madras What were you last year. studying? I was studying engineering design and I took specialization in biomedical engineering. तो And what are वही you I handling now at Level? oh man everything सब कुछ। Pretty much everything. सब कुछ। इंजीनियरिंग तो एक फिनिशिंग स्कूल है, मतलब वहाँ पे यू Yeah. लर्न एवरीथिंग, एंड लेवल में सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ। तो विथ हर्षिल तो एंड रणवीर Of course. तो या मतलब आई थिंक एक सही टाइम आएगा। आई हैव अ थीसिस की, मतलब आई हैव अ हाइपोथेसिस की कमिंग टाइम पे ना सोशल मीडिया में भी निशिफिकेशन होगा। मतलब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं हाँ। और जैसे हार्ट का एक डॉक्टर है ना, तो आई विल फॉलो, अगर मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है तो मैं हार्ट के डॉक्टर को सुनूंगा, ना कि MBBS जनरल। So you're saying generalist versus स्पेशलिस्ट इन सोशल मीडिया भी आएगा 10 साल में, क्योंकि What's अभी your take? I think so. Yeah. I think so. Anyway, the world is moving more and more into specializations. Because अगर आपको एक चीज़ के बारे में सुनना है तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाओगे. And I think that's not just to do with world of content. The world of products is anyway like that. Yeah. Yeah. So now the world of content is also becoming all about niches. So it's a good thing, I feel. trying I mean, it's a figure out. natural extension. And you know, one thing you said कि आप content की दुनिया में हो, तो I think we are sitting somewhere in the intersection between product की दुनिया, Yeah. digital product की दुनिया और content की दुनिया. So that is where our sweet spot is. Lot of our reading and lot of our, this thing. In fact, for me also, till last year, I was not really active on social media. I used to do like my own thing, but now Yeah. I'm trying to take it a little You're seriously. pretty much active on LinkedIn. So now I have put somebody to like help me Yeah. just make sure that something's going out every day. Yeah. In one of your LinkedIn posts, you mentioned 5 principles in one of your featured posts. I think our team has done pretty much good research. And you've mentioned, how do you take X, give back 9X? What's your thesis on that? I mean, X is value, and he's talking about money. 80 rupees to earn 100 Rupees. rupees. Yeah. But you can give value, and value is a very subjective thing. ठीक है, मान लो आप मुझे 100 रुपये मैं आपसे ले रहा हूँ, मैं आपको 100 रुपये की सर्विस दे सकता हूँ प्रोडक्ट वाइज, एंड मैं आपको बहुत अच्छा फील भी करा सकता हूँ साथ में, which itself is a value. है ना, that emotion is a value. Correct. The promptness to मतलब if you have a कुछ query, the 20 मिनट के अंदर रिप्लाई करना इज अ वैल्यू. वैल्यू इज अ सब्जेक्टिव थिंग, Correct. ठीक है, बट ऑलवेज ट्राइव टू गिव मोर, क्योंकि दैट्स हाउ यू विल ग्रो, है ना. मतलब कोई भी बड़ी कंपनी, सस्टेनेबल कंपनी, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, लॉन्ग टर्म खेलने के लिए ना ये DNA चाहिए, X to 9X. एंड जो समझ है मेरा कि जितना लंबा आप सर्वाइव करोगे ना, वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनना है, इक्विटी से या स्टार्टअप से. लॉन्ग टर्म खेलने के लिए यू नीड टू बी अ गिवर, क्योंकि अगर थोड़ा वो अंदर रह गया ना कि आई वांट टू टेक 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 टेक, आई एम नॉट श्योर जितना मेरा एक्सपोजर है हाउ लॉन्ग यू विल लास्ट. तो ट्राई टू गिव, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ दैट एक्स्ट्रा वैल्यू. मान लो कॉफ़ी बना रहे हो तो ऊपर एक अच्छा शेप दे दो, मेल लिख रहे हो, आपने परचेज किया कुछ अच्छा सा. What was your email to, what was your DM to Harshil? सिंपल कि Because I talk about people shooting, like taking that shot. You send that email or you send that DM. देखो तो सही क्या होगा. Like I got my previous guests, obviously they're all friends in the industry, but then I also reached out to people who I don't know. So I just sent them a DM. Who was this?
So this was in 2019 when I was doing COVID. Well, during COVID, when I was doing Instagram live sessions, and I was at 2,000 followers back then. 1,500 followers के करीब थे. And I was like कि ठीक है Instagram live पूरी दुनिया कर रही है, हम भी Instagram live करेंगे, followers भी बढ़ जाएंगे और time pass भी हो जाएगा, मतलब both. like ठीक है, fair, great idea. So I started reaching out to actors, and that time reels आया नहीं था. So actually having 10k followers meant that you've actually worked your ass off and gotten that 10k, which now seems like a very easy number to get to. Even 100k right now is like, हाँ any random person has it. I'm like, भाई सबके पास ये तो फिर जिसके पास है उसका value क्या है? So I was like, ठीक है, let's reach out to people. And उस समय swipe up story था, उस समय वो LinkedIn sticker नहीं था, sticker link नहीं था. So I reached out to a lot of creators, entrepreneurs, musicians, artists, and with just a cold DM saying that, hey, I hope you're doing well, and then some research about the person. Say, if I'm reaching out to you, love the work that Shebang is doing right now, and I really admire you as an entrepreneur, and the kind of impact you've had in the entrepreneurship spaces has been absolutely phenomenal. I, on the other end, straight away coming to the ask now, and why are you the perfect fit for that particular ask? I'm just going to say that, okay, I'm a media entrepreneur and I also run this media production and I'm also a creator. So I'm starting this and I need, say, an hour of your time whenever you're free. My ask, and then simple. And I concluded by saying I'll accept no for an answer. So that puts them on the spot, thinking कि यार ये he's okay with no. So a lot of people obviously didn't reply to it. A lot of people said no. Again, कि हाँ ठीक है, नहीं करेंगे इसके साथ. But a lot of people said yes. So then I started using those names in my future email, who were credible. So there were actors, there was Viraj Gilani, there was Jwala Gutta, 2-time Olympian, there was Ehsas Channa, who's an actor. So we've got all of these people, and then just through DMs, and I was at 1,600 followers, and Ehsas was like at 1.6 million. So it's just like 1000x. But so that cracked. So I really want people to know your cold DM that sort of worked. So there's always this co-founder story that every startup has, right? So just explain the story, or just go ahead, deep dive into the story. बहुत टाइम था कोविड में फ्री था मैं, ठीक है, थैंक गॉड. बोर होना बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ बोर हो लाइफ में. We'll come to that. बोर होना बहुत ज़रूरी है. मैं विपासना गया था, मैं विपासना से बाहर आया, वेरी सेंसिटिव टू काम ब्रेन और ये सब. एंड मेरा ऐसा कुछ 1000 DM वाला स्टोरी नहीं है. मतलब आई हैव अ थिंग, मैं स्टार्ट में ही बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा इंट्यूशन था कि अगर वो एक अंदर से आवाज़ आ गया ना, आई डू इट. मतलब कितना भी लॉजिकल हो. आई सीइंग रणवीर एंड हर्षिल जी का पॉडकास्ट, एंड आई ऑलवेज टेल हिम द सेम थिंग. वो एक जेन्युइनिटी है, एक नो BS, मतलब एक फेकनेस नहीं है, एक जेन्युइनिटी है, which I can recognize in the voice at that time when I heard him. अभी भी बोलता हूँ कि और जाओ और बोलो जो सत्य है उसको, और जो ट्रुथ है उसको और दिल से बोलो. तो I heard that sound, that voice, and I was like, मतलब सुन रहा था मैं, इंस्टा में एक्टिव नहीं था. I just opened Insta. I was like, I want to make a dent in universe, and I think we can work together. मेरे पास resume था, मैंने एडिट भी नहीं किया, स्क्रीनशॉट खींच के भेज दिया. Simple. There's no thought behind it. A heart voice of heart. And then I just sent, and he replied कि आ जाओ, we can do something together. And what made you say that, Harshil? सही बोलूँ तो मेरे को IT वाले से कोई मैसेज कभी आता नहीं है. तो मुझे लगा कि अच्छा है, IT वाला बंदा मुझे मैसेज कर रहा है, तो देखते हैं क्या है. और फिर ऐसा कि हाँ ठीक है, प्लेन टिकट भेज लेता हूँ, आप आ जाओ. फिर और देन और दैट वाज द स्टार्ट ऑफ लेवल सुपरमाइंड जर्नी. तो मैं सोच रहा था कि प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट साइंस के बारे में कुछ पता नहीं था मुझे. सब जो भी सीखा है हम लोग ने साथ में बैठ के सीखा है. तो आई न्यू कि I would need a sound person who can balance operations, technicality, और इसको सब मिला के एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे बना सकते हैं, मुझे पता नहीं अभी तक. तो मुझे एक को-पायलट की ज़रूरत थी. और तभी आयुष का मैसेज आया, और फिर
सच्ची तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि Yeah. आईआईटी से कोई मैसेज करता ही नहीं था Right. तो एक आया तो मैंने बोला कि ट्राई कर लेते हैं और फिर इट वाज अ गुड जर्नी बिकॉज ही स्टार्टेड एज अ इंटर्न Right. एंड फिर फर्स्ट ही असाइनमेंट में दिखने लगा कि बंदे में बहुत दम है बिकॉज उसके पास जो क्लैरिटी है जो प्रिसिजन से वो काम करता है आयुष से मैंने काफ़ी ये सीखा है कि आई वुड से कि मैं बहुत मतलब इन अ वे अगर मैं अपने आप को थोड़ा क्रिटिसाइज़ करूँ तो काफ़ी मतलब लोग कह सकते हैं बिग पिक्चर थिंकिंग मैं उसमें बोला बिग पिक्चर थिंकिंग में काफ़ी फ्लफ भी आ जाता है तो फिर उससे मैंने काफ़ी सीखा है कि अपने आप को मेथोडिकल कैसे बनाना एनालिटिकल न्यूमेरिकल कैसे बनाना और वो एक पोटेंट कॉम्बिनेशन हो जाता है फिर और आई थिंक मतलब आई फील इंट्यूटिवली आई एम अ मोर क्रिएटिवली माइंडेड एंड बिग पिक्चर माइंडेड पर्सन और फिर ये एक अच्छी क्वालिटी आ गई वे यू कैन add numbers to your big picture story. So the story with numbers with the big picture is added to my Becomes a arsenal. good arsenal, yeah. In terms of how I did that. So फिर आयुष you know आए और फिर इनको मतलब हमने आई थिंक पहला जो प्रोडक्ट किया था पहला जो काम किया था हमने वी बेसिकली एनालाइज द टॉप 20 टेड टॉक्स in the world with respect to self improvement and happiness. Okay. And we try to find the commonalities in All the talks. Okay. So that gave the base of what future content we are going to put onto the Level Supermind platform. Okay. And second part of it is also, you know, प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन प्रोडक्ट प्रिंसिपल्स कैसे बनाए कंज्यूमर सेंट्रिंग कैसे हो वो सब मैंने आयुष से काफ़ी नए नज़रिए से सीखा सो फिर इंटर्न से फिर उसको वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया एंड देन क्या टाइम डिफरेंस था फ्रॉम एन इंटर्न टू सीईओ आई वुड से रफली 6 months और सीईओ से को-फाउंडर वाज हार्डली 2 months so because it was about 8 months you were the co-founder you are the co-founder मतलब हाँ अब याद नहीं आ रहा मतलब इट फास्ट था ठीक है एग्जैक्ट याद नहीं है बट हाँ इट वाज क्विक प्रीटी क्विक या बट ठीक है हाँ इट्स डाउन द लाइन इट्स अ टाइटल डाउन द लाइन प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए बिजनेस अगर जो भी हम बना रहे हैं इट शुड हैव अ वैल्यू है ना मेरे साइड ऑफ स्टोरी क्या था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 था बैकअप के लिए डिग्री है ही अभी भी हमेशा रहेगी तो यार एम्बिशन है मेरे अंदर एक अंदर से मेरे को बोन में फीलिंग होता है कि कैसे बोलूँ where does this ambition come have you always been ambitious or is this an off late thing after you say sent that DM or after you joined Harshil and his work हमेशा से एम्बिशन तो नहीं था पहले ऑप्टिमाइजर था मैं मतलब गिवन रिसोर्स व्हाट बेस्ट आई कैन डू got it एंड स्कूल में मैथ्स अच्छा था तो पापा आईआईटी बोले पापा का आई ओ हिम तो आई हैड टू फुलफिल आई विल फुलफिल व्हाटएवर ही वांट्स देन फिर व्हेन आई केम हियर मेरे को अभी भी याद है जब मेरा इंटर्न क्योंकि कॉलेज के साथ आई कांट वर्क आई वाज गेटिंग सम स्कॉलरशिप आई कांट वर्क अच्छा तो आई वाज इंटर्निंग तो इंटर्न जब खत्म आई मेल्ड हिम आई स्टिल रिमेंबर व्हाट आई मेल्ड कि नाउ आई नो इनफ कि आई हैव एवरीथिंग नीडेड टू बी वेयर आई वांट टू बी and the more books I am reading अश्नीर हो गया या जो भी I read a lot the more I am reading the more I am studying how इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बन रहा है मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं इनफैक्ट बढ़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसा उनमें मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ओ ये है में नहीं होगा तो आई हैव गुड सिग्नल्स कमिंग कि अगर वो 500 CR कंपनी से ज़्यादा चला रहे हैं एंड उनका थॉट प्रोसेस उनका स्टोरी उनका बैकग्राउंड एक तो वहाँ से रिलेटेबिलिटी हो ठीक है कि इतना बन रहा है तो हो जाएगा सेकंड एक बोन में भी रहता है इट्स नॉट कमिंग इट्स देयर एंड कॉलेज में भी इट्स नॉट फोर्स्ड कॉलेज में भी इट्स देयर अभी और कॉलेज में भी मैं देखूँ तो मैं इनको भी बोलता हूँ कि I've seen in college I've seen people internally मतलब IITs of the world और ये सब मतलब I went outside I see that तो मैं अपने एज में जब देखता हूँ तो मेरे पास डाउट और कम होने लगता है कि अगर अब हमें ही आपके सामने दिख रहा है वो डेटा ड्रिवन माइंडसेट कि वो बिग पिक्चर थिंकिंग मैं वही बोलने वाला था अभी तो हो जाएगा इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम
all I need to think about is how to last longer and be service mindset. ये उल्टा है, वो U2 का सॉन्ग है, द मोर यू सी द लेस यू नो, इसके इसमें उल्टा है, द मोर यू सी द मोर यू नो. No, but I think it's a pretty good quality to have. Yes, because definitely. I think how's the quickly wrapping up your conversation, because you mentioned about engineering. I really want to get to your engineering days. क्या माहौल क्या है engineering colleges में? Oof. Because there are a lot of students who will be watching this. यार आज की स्टूडेंट्स जो देख रहे हो, ऑल द बेस्ट. कल्चर चला गया तुम्हारा क्योंकि कोविड हो गया, सीनियर का टच नहीं है. हमारे समय में तो था. आई एम प्रिटी. अभी जो कल्चर आ रहा है वो थोड़ा एडमिन इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, कि एडमिन के कंट्रोल पे. हमारे समय में देयर वाज लिटरली स्टूडेंट रनिंग स्टूडेंट कम्युनिटी. मतलब इट वाज अ गवर्नमेंट इन इटसेल्फ. तो आई तो हैड लाइक, आई डोंट नो व्हाट हाउ मोर आई कैन लिव माई कॉलेज लाइफ. मतलब 4th ईयर तक तो आई वॉज थोड़ा ओ माई गॉड क्या करूँ. तो इंजीनियरिंग बहुत अच्छा था लाइफ, ठीक है. आई बर्न माई हैंड्स अ लॉट, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैक्सिमम क्या होगा, डिस्को लगेगा मुझे कॉलेज में, ठीक है. डिसिप्लिनरी एक्शन, दैट्स अ मैक्स दैट कैन हैपन. इसको क्या बोलते हैं, डिस्को? हाँ, मैक्स दैट कैन हैपन. बट अपसाइड क्या है मेरे पास, दैट्स अ मैक्स रिस्क. एंड मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है, आई जस्ट वेंट इन एंड बर्न माई हैंड्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है. मुझे रिसर्च देखना था, मैंने देखा. FMCGs ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबल देखना था. कंट्रीज घूमने थे, तो अपॉर्चुनिटी. आई ट्रैवल 14 कंट्रीज सेकेंड ईयर में. तो बढ़िया. Where did you travel? पूरा वो सर्न के साइड, यूरोप साइड, सिंगापुर, मलेशिया, ये. तो सेकेंड ईयर में हैड द थीम कि आई वांट टू गो आउट बिकॉज आई वांटेड टू नो कि क्या करना है. एंड देन फिगर्ड आउट अ वे. फर्स्ट आई एम लकी हैपेंड, ठीक है. इट्स नॉट कि आई एम डूइंग. तो इट वाज गुड. कॉलेज लाइफ वाज गुड. Or since I was an explorer in college, I burned my hands in wrong direction also. So I know right now what I am not made for. I don't like alcohol. I'm not an alcohol person. Okay. मतलब I think alcohol brings a side of me which I am not. ठीक है. And मेरा body ही recently मुझे पता चला मुझे allergy भी है alcohol से. तो that is my body reflects alcohol. Second, I came to know कि I don't want to be in wrong rooms. I want to be in the rooms where people push you up. मतलब I don't want to be in rooms where, because I don't flourish there. What is a wrong room? Any room where people are not thinking when you share your success, where they are not pushing you up in a good way. है ना? That's a wrong room. ठीक है. मतलब अभी क्या हो गया ना, I thrive in right rooms. मतलब I don't spend more than 5 minutes अगर मुझे sense आ गया this is not the right room. And I मतलब जिस room में मैं भी हूँ, I make sure कि I am the right person for them. Is that also you use? Is that a thing that you guys also use while hiring people? Like you see that firstly we'll come to the hiring part, so we really want to understand how does hiring happen, because I was in the edtech space in my first venture. It was called Career Kida, and we had a really hard time hiring people and we believe that one bad fish spoils the entire pond, and we had made that one bad hire and that person spoiled the entire team. So does that thesis also apply while you're hiring, कि यार you ambition match होना चाहिए, or you know vision, both thing that both of you see for your company, that person should also see that picture or even a larger picture maybe. So does that also gets implemented while hiring also? मुझे लगता है ना कि culture can undo certain things, ठीक है. Culture has a power to push you up even if you are in the wrong. But there are certain people, obviously I understand right fit नहीं है. What I look when I'm hiring is the hunger, basic skill sets, and most important is the person trustable and lucky. Harshil, how do you establish trust while hiring? Because when you're hiring, I always say this is like a relationship where either the guy or the girl is trying to woo the other person till the time that he or both of them are together. कोई भी relationship एक risk है, very honestly. ठीक है. तो आप जितना टाइम दोगे, हाँ, आप जितने डेटा पॉइंट्स पे देखोगे, हाँ, उतना ट्रस्ट बढ़ेगा. Sorry to cut you there. How many years have you been married? No, मेरा चलो ठीक है. No, anyway, continue. But basically आप you know in terms of ये कोई so with any hire, at the hiring stage आप क्या देखोगे
एफर्ट, सिंसेरिटी, स्किल सेट, एटीट्यूड, और ये सब चीज़ों के लिए आप एफर्ट, सिंसेरिटी, स्किल सेट और एटीट्यूड के लिए आप टेस्ट करोगे. एफर्ट कैसे टेस्ट करोगे? आप डिटेल्ड डिफ़िकल्ट असाइनमेंट दोगे तो आपको एफर्ट दिख जाएगा. अगर बंदे ने या बंदी ने वो असाइनमेंट बनाया तो एक चीज़ है एफर्ट. स्किल सेट अगेन असाइनमेंट, बिकॉज आप एक असाइनमेंट वेरी वेरी फोकस्ड दोगे. Correct. और अगर आपने फोकस्ड असाइनमेंट दिया तो आपको हार्ड स्किल पता चल जाएगी. Correct. Correct. और आई थिंक बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू शुड हायर फॉर एटीट्यूड. स्लाइटली डिसएग्रीइंग ऑन दैट, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आप कंपनी में लोगों को ला रहे हो, आप लोगों को ला रहे हो एक नीश फिल करने के लिए या एक रोल या एक जॉब फिल करने के लिए. Correct. तो आई थिंक हार्ड स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप किसी को इंजीनियरिंग के लिए ला रहे हो या किसी को प्रोडक्ट के लिए ला रहे हो या किसी को कंटेंट के लिए ला रहे हो या किसी को मार्केटिंग के लिए ला रहे हो, यू आर हायरिंग फॉर बिकॉज द कंपनी एज अ ऑर्गेनिज्म नीड्स कि ये एक रोल फिल हो जाए. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्ड स्किल के लिए. और मैं क्यों कह रहा हूँ आज की दुनिया में, बिकॉज आज की दुनिया में आई थिंक यू नो विद पीपल लाइक यू, विद पीपल लाइक रणवीर, जहाँ पे एटीट्यूड, स्किल सेट वो काफ़ी आई मीन इफ़ बंदे में लगन है और माइंडसेट है कि मुझे कुछ करना है, तो वो काफ़ी इनग्रेन्ड हो गया मेरे हिसाब से. बिकॉज यू नो व्हेन आई स्टार्ट माई करियर 2008 शायद इतना था नहीं वो. नाउ इट्स बिकम परमिएटेड इनटू द कल्चर कि I think it's also, I don't know, you see people, a lot of people feel jealous when they, so if I see you, I might get jealous by seeing you, which could be the wrong attribute. But if I'm getting jealous and then I take action and that inspires me to take even more action to get there or maybe surpass and become the topmost player of the industry, then I think that is probably channelizing the jealousy into something or into maybe fructifying it to build something for yourself. Yeah. So people can channelize anger, people can channelize jealousy. What I mean is the attitude to prove yourself is I think now in the air of this country. So that's why I say hard skill first. Right. And then the second part you test is the soft skill, which is all of this attitude and skill set, mindset. Those are things you get better at inside interviews. So kind of questions जो आप पूछते हो कि you know अगर situational questions, अगर ये हुआ तो आप क्या करते, अगर ये हुआ तो आप क्या करते, और अगर आप एक किसी को लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बनाने को बोलते हो या फिर आप आपके कल्चर के बारे में किसी को समझाते हो और फिर somebody has to write a essay कि why they fit into your culture. Those are the mindset things that you'll put in. But that's what you can see at the stage of hiring कि आप मतलब आप basically एक barrier to entry high बना दोगे. I feel to create a good hiring brand, one is it should be difficult to get inside your organization. Right. Very honestly. Right. Because जितना difficult होगा उतना आपका रिफ्रैफ निकल जाएगा. तो जिसको एफर्ट नहीं करना है वो निकल जाएगा. और आपको एक मतलब उसके साथ आपको एक हायरिंग पाइप इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी है कि फॉर दैट वन रोल यू हैव एटलीस्ट 10 पीपल वाइंग फॉर दैट रोल. तो अगर आप वो हायरिंग पाइप स्ट्रॉन्ग बनाओगे, और वो हायरिंग पाइप स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी, अगर कंपनी का पर्पस स्ट्रॉन्ग है और अगर कंपनी का ब्रांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है कि यू नो हायर स्लो बट मेक इट हार्ड, build enough competition for that role by building a strong hiring brand and by building a strong purpose. I think ये basic fundamentals है कि how you can recruit good talent. And it's easier said than done because ये काफ़ी 3 strong मतलब ये difficult concepts है. कंपनी को पर्पस ड्रिवन बनाना इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. कंपनी का हायरिंग ब्रांड स्ट्रॉन्ग बनाना, कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग बनाना difficult concept. Sometimes it takes decades to build that. Yes, takes time. And company उतने साल बचती नहीं जब तक you try to sort of build that hiring brand for yourself. Interesting. We'll take a segue. I was reading about you, and it said that you were a lead singer in your school days. हाँ जी. Do you still sing? कोशिश तो करता हूँ कभी कभार. अभी लास्ट 2 साल से जब से हमने ऑलमोस्ट 1.5 years लेवल सुपरमाइंड पे ज़्यादा फोकस किया है, टाइम नहीं मिल रहा है. बिकॉज 1-2 लाइन सुना दो. 1-2 लाइन या गा के सुना दो. या ऑफ कोर्स.
चलो if you're comfortable, वैसे it's the chill hour, so you can say Chill. no. You can chill. Yeah. that's your hallmark quality. You say you can say no. So Yeah, the ball's in my court Yeah, now. yeah, of course. I just throw it to you कि भैया आप no बोल सकते हो, मैं I'm okay. Okay. तो स्कूल से याद आए, गाना था हम लोग गाते थे वहाँ पे, बंदे, इंडियन बंदे। ओशन का गाना. Okay. सुनाओ तो. Which song? इंडियन ओशन का. I don't recall at the moment. आप Okay. गा के सुनाओ, याद आ जाएगा. मेरी टाइम का है. आप How old do I look? I could be 35 too. No. I mean, no? No. 28. Elder? 28. 7. 27, 28. Yeah. So yeah, so song Wisdom. by. This is wisdom. You can guess the person's age by just anyway. Coming to the song. Okay. अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, की कुदरत हंस पड़ेगी हो. अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, की कुदरत हंस पड़ेगी हो. Fabulous, fabulous. We'll add drum rolls and claps in the edit. Let's talk about meditation. How long have you been meditating, both of you? 2.5. Yeah, 2.5 for me years. it's about 5.5, 6 years. How do you start meditation? What's the basic meditation exercise? I would say that having been through different attempts at meditation, to do a first meditation which is guided, that takes you through the different skill sets that you may need Okay. to meditate, which is to focus on your breath, which is to be able to deal with a lot of passing thoughts, which is to do with dealing with what happens when you still your mind down for the first time, which is to deal with what areas to put your focus on when you start meditating. How do you start meditation as somebody जो जिसने meditation की नहीं है आज तक, जैसे I've tried and I failed. तो आपने कहाँ पे ट्राई किया? मैं घर पे ट्राई कर रहा था. ओके, तो आई फील आफ्टर हैविंग, हाँ घर पे कहाँ पे? घर पे मैं नीचे बैठा था. ओके. And हाँ मतलब मेरा idea जो है, because I've not studied this in depth, so and I'm sure there are a lot of people like this out there who are watching this and have no idea what meditation is whatsoever. So actually, before telling you where to start and how to start, I'll come to that also, but very quickly, I think it's important for people to buy in why they should start also. बता दो. Because according to the science of meditation, in 2 weeks, you will start seeing reduced signs of stress. Okay. So in 1 to 2 weeks, actually, if you consistently do 7 to 14 days of practice, you will start seeing And reduced signs of stress. How many hours is this per day? It's about 15 to 20 minutes a day. 15 minutes per day. 15 to 20 minutes आप निकालो और you will see reduced signs of stress. Okay. In 2 to 3 weeks आपको दिखेगा कि आपका focus बढ़ रहा है. Again आप continue करते रहो तो consistently आप 15-20 minutes per day 3 हफ्ते के लिए करो, आपको फोकस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. अगर आपने कंसिस्टेंटली 2 साल किया तो यू विल सी साइंस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज लर्नेबिलिटी, मतलब मेमोरी, लर्नेबिलिटी, वो सब एक्सपैंड होने लगता है. Got it. और अगर आप 5 साल कंसिस्टेंटली करोगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑल्टर्ड ट्रेट्स. बेसिकली योर brain structure will evolve for you to increase your speed of thinking. Okay. So that is why I believe everybody should do it, because Fair enough. आपके लिए मतलब for you to be able to maximize yourself,
this is the smartest tool Yeah. to be able to maximize yourself. तो वो हुआ why. तो पहले after you're convinced on the why, then the what becomes very easy. And I'm convinced. Now. And there is an amazing book. How. Huh. There is an amazing book called The Science of Meditation. Okay. Which is written by Richard Davidson and I forget the second gentleman's name. But Richard Davidson is the prominent figure who's written this book, The Science of Meditation, and they've spoken a lot about this, and they've spoken a lot about the various scientific tools that they've used to evaluate basically what I'm telling you. Yeah. Okay. तो वो हुआ why. ठीक है. और फिर let's start with how. हाँ. तो मेरे एक्सपीरियंस में the best way to start a meditation journey is to really look at it as a journey. Okay. Or the guided meditation process for a period of up to 2 to 3 years is actually the best way to stay on the path. So guided meditation is basically you plugged in your your AirPods or earphones or whatever, and आप सुन रहे हो किसी को जो आपको guide कर रहा है through various styles of meditation. Okay. तो आप जब भी शुरू कर रहे हो तो what you need to do is you need to almost like जैसे कोई भी लैंग्वेज लर्न कर रहे हो तो आपको ABC पता है, आपको सिंटैक्स पता है, आपको नाउन्स, वर्ड्स, प्रोनाउंस, आपको वो सब सीखना है, राइट? करेक्ट. तो मेडिटेशन भी ऐसे एक स्किल सेट है. तो आपको सीखना है कि ब्रेथ को कैसे फॉलो करें, आपको सीखना है कि अगर आपके थॉट्स यहाँ से वहाँ गए तो आप उसको कैसे डील करें, आपको सीखना है कि ब्रेन मतलब आपके माइंड को कहाँ फोकस करें. एक recently I heard Simon Sinek say something very, very beautiful, which is the fact that what meditation is doing is it is not making you focus on nothing. It is making you focus on only one thing. One thing, yeah. And why focus on only one thing? And that has an impact in your life, because then when you are having this conversation, you're only focused on this one thing. It's training your mind to focus on the task that you're doing. Do you also have thoughts right now while you're speaking about this? Not really. Not really? Not really. Okay. Are you having No, thoughts? I'm just there. मतलब I'm seeing the bottle actually. Listening and focusing, but Got it. And that has the impact on stress, etc. Right? So because why does stress happen? Stress happens because you've magnified something more than what it's Than it supposed to be. actually is, yeah. And you're thinking about the past of that, and you're thinking about the future of that, rather than looking at that as that, to be able to deal with that as that. So one of the things that especially younger folks deal with is overthinking. Yeah. And I've dealt with it myself. Although I'm not that much of an overthinker, but I have people around me who overthink the hell out of everything. Yeah. How can meditation help in dealing with this? So I think meditation is about this. I mean, the way I look at it is actually is the process of creating mental fitness. So I think there are two things: as mental health, and most of the time the mental health conversation is around curative mental health. So nothing against therapy. I think it's a beautiful process. Right. But I think you can't just do it alone. You know, it's like अगर आप अपने आप को क्लीन कर रहे हो, Right. और अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो साथ में, तो आगे बात नहीं बढ़ेगी. So the way I see it is that the process of therapy is the process of really, cleansing the parts of you that may be holding you back. Got it. And the process of meditation, journaling, even to a large extent working out mindfully, those are processes of strengthening mental fitness. So Got it. I look at actually meditation almost like a pathway, and this pathway is helping you understand yourself and is helping you understand life. And it's almost like you keep coming back into the pathway, understand yourself, come back, you understand life, you come back. So it's a bit like that. So it's the time to yourself when you still yourself down, when you shut yourself down, when you're more consciously observing what thoughts are there. Right. And then you're really, kind of over time, आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन करोगे, इम्प्रूव करोगे, तो आपका इंट्यूशन इम्प्रूव हो रहा है, आपका फोकस इम्प्रूव हो रहा है, आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो रही है, आपका रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस इम्प्रूव हो रहा है. तो ये सब चीज़ जो हो रही है,
is when you're skilling your mind and training your mind to become strong and have a muscle around it. Yeah. So actually the analogy of six pack is not too far away. It is really about I'm building pretty a sure, six pack on your mind. Yeah, because I want Ayush to pitch in here, because I've struggled with having that laser sharp focus. B, I think I have a lot of thoughts at one point in time. And it has become better. Like initially it was worse, it was way worse. But अब बहुत better हो गया. Because now I feel that I've resumed working out. And that has helped me a lot. Yeah. And I'm not that वो मेरे से नहीं होगा. I'm more of an athletic person, so I'll run, I'll sport. I go to cult. Okay. Very simply, I go to cult. There are a lot of classes. There is SNC, there is HRX, Right. there is boxing, there is dance fitness, Right. there is yoga. Right. So you do all of these things. And depending on what your strength is, what you like. So I love dance. And the best part is I can't dance. Which is why it is entertaining for people around me. But even then I've realized that I have downplayed myself way too much. अब मैं कर सकता हूँ, I can move. That I realized after joining cult. So when I started working out again, that's when I realized that it has gotten way better now. Initially बहुत difficult होता था to sort of articulate my thoughts. Now that I'm able to articulate is because I think there is work on plate. So there's not a lot of there is stress, but there is professional stress. And once you have work on your plate, you should be grateful that you have work. And that stress is okay. That stress is still fine than stress from no work. So it has gotten better, but I'm still trying to struggle with, having that laser sharp आप focus. प्लीज ऐड कीजिए ये मेडिटेशन को आपकी लाइफ में. हमारे ऐप पे लेवल सुपरमाइंड पे हम लोग एक्चुअली उस पे ही फोकस कर रहे हैं. हम लोग दो चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. हाउ डू आई स्टार्ट एंड हाउ डू आई कीप कंटिन्यूइंग. ओके. बिकॉज यूज़र से हम लोग ने जब भी बात की, बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, हर एक यूज़र के पास है. बिकॉज वो बोल रहे कि आई एम सोल्ड, आई एम कन्विंस्ड. 7 out of 10 people return back to your app. Yeah, 7 out of 10 who pay monthly continue to pay. Retainer. Retained. Retain customers. So either they pay annually or they pay monthly, or 7 out of 10 who pay monthly continue to return. But I think that's not really the main thing. The main thing is कि हम लोग ने बहुत skillfully. नहीं, ये तो मेरे को pitch करना था कि मैं LinkedIn में पढ़ा था. ये तो मेरे को. This is a selfish pitching. Anyway, carry on. तो हम लोग ने क्या किया कि पहले एक depending on how you want to start, एक 21 days की 5 minutes per day की सीरीज, 5 minutes per day की सीरीज की है. Okay. ताकि आप अगर आपको 15 मिनट नहीं करने हैं तो आप 5 minutes per day 21 days के लिए आप एक हैबिट बिल्ड कर सकते हो. फिर 7 days के लिए एक आप ज़्यादा और डीप कर सकते हो इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन. फिर और 7 days है, उसके बाद आप ऑल द डिफरेंट टूल्स को अच्छी तरह से जान सकते हो. फिर और 14 days आप फोकस बढ़ा सकते हो. डिपेंडिंग वैसे एक जर्नी बनाई है हम लोगों ने, ताकि यूज़र्स जब भी एक मेडिटेशन प्रोसेस में जाए दे कैन अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट स्टाइल्स. और फिर एक इंटरमीडिएट लेवल है जहाँ पे दे कैन गो अप एंड दे कैन डीपन द प्रैक्टिस. और फिर एडवांस प्रैक्टिस आप डीपन कर सकते हो. और मेडिटेशन सच ए ब्यूटीफुल प्रैक्टिस की मतलब ब्रॉडली अक्रॉस द वर्ल्ड. सॉरी मैं आयुष थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट इट्स सच ए ब्यूटीफुल प्रैक्टिस की देर आर 3 broad schools. One is around breath work. Okay. It's about following your breath. One is around visualization, so it's about following a voice which is making you visualize. Okay. Or third is around chanting and mantras. So हम लोग अभी ऐसी एक मतलब एक लाइब्रेरी बिल्ड कर रहे हैं कि all the 3 styles, all the 3 schools we are putting Can come in one place. as much depth as possible, because I think every person's meditation journey is, जैसे आपने बोला ना कि आपको डांस पसंद है, आपको वो नहीं पसंद है, बट और बहुत लोग हैं जिसको ऐसा पसंद है. तो in a way what we are building on Level Supermind is the ability for the people to find their style. और introduction process में अभी जो हम ऐप में जो journeys build कर रहे हैं उसमें you get exposed to various styles and you keep telling the product what is it that I am liking more. और फिर उसके हिसाब से आपकी जर्नी और टेलर मेक हो जाती है. और मतलब काफ़ी सारे स्किल्ड इंस्ट्रक्टर्स हम लेके आ रहे हैं. What is an interesting insight into building Level? Ayush, if you can share something.
I was in terms thinking of जब ये meditation, yeah. सब डिस्कस हो रहा था तो एक स्टोरी में दिमाग में बन रहा था कि हाउ शुड आई सी इट, क्योंकि मेडिटेशन एक लोडेड वर्ड है, आधे लोग ऑफ हो जाते हैं मेडिटेशन सुन के। Yeah. हाँ तो इमेजिन आपके पास एक पेट है, डॉग, ठीक ठीक है, है। थिंक कि वो ब्रेन आपका पेट है, हम्म, ठीक है। अभी वो पेट का एक नेचर होता है, इधर उधर भागता है, ट्रेन नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। इफ माइंड इज Correct. नॉट ट्रेन्ड यू आर गॉन। अगर बॉडी थकानी है, अगर पेट थकानी है तो बहुत जगह भागता है, ओवर थिंक करेगा, यू Correct. लूज कंट्रोल। Correct. अगर पेट में भी ट्रेनिंग का एक तरीका होता है, हम्म, मतलब थोड़े ट्रेनिंग तरीके एक पेट ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, थोड़े ट्रेनिंग तरीका एक पेट कम रिसेप्टिव होता है, टाइम लगता है उसमें पेट को ट्रेन करने में। तो मेडिटेशन इज द ट्रेनिंग for your pet, which is your brain. But once the pet is trained, you love it way more, and it's way more effective. मतलब मान लो मुझे अभी किसी ने कुछ बोल दी, ठीक है, and my pet is trained, और मुझे इस वक्त कहीं ना कहीं अंदर से अभी प्रेजेंट में ही रहना है मान लो, या मुझे अभी अपने काम पे ही फोकस करना है, तो पेट इज ट्रेन्ड, आई कैन डू दैट, आई कैन फोकस मोर ऑन कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। गुस्सा आता है आपको? अब जब आना होगा आएगा, नहीं आएगा, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब गुस्सा करना मुश्किल है, हाँ। बट आ गया, पेट भाग गया तो भाग गया, उसमें कुछ मुझे ऐसा वो नहीं है कि अरे क्यों भाग रहा है, हाँ. वो एम्पैथी है, ब्रेन हैज अ वे, ब्रेन इज अ टूल, उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा इट्स ओके, द थिंग इज हाउ फार यू कैरी इट, वो गुस्से को आप कितने दिन तक खींच दिए, उस मोमेंट में आया फिर चला गया, खत्म। अभी इट्स लाइक अ पेट, ठीक है, तो हैव लव फॉर द ब्रेन, train it well. Once the tool is your weapon, not a weapon against you, you can do a lot of things. तो वो जो sense of mastery है खुद के brain के ऊपर, it's very, it makes you feel very powerful inside after a certain point of time, in a nice way. ठीक है, you are in charge of your own lot of things. Time लगता है, But I think this makes sense. I think I'm going to try for sure, because this is something that I am really dealing with, and I feel that working out has helped a lot. But more than the physical fitness, I think it has helped in the mental fitness part. But I would love to take guided meditation also, and which of course deals with reducing stress and anxiety, and more than that, having that laser sharp focus कि हाँ मेरे को अगर इस पे focus करना है, then I'm just focusing on this, I'm not focusing on anything else. That one focus where अगर मैं podcast करूँ तो मैं podcast के बारे में ही सोच रहा हूँ, मैं भी distribution के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि इसका reel बनेगा, इसका shorts बन जाएगा, इसका YouTube पे clip बन जाएगा, इसको LinkedIn पे डाल देंगे, ये नहीं सोच रहा हूँ मैं। अभी मैं conversation कर रहा हूँ, उसके बाद जो निकल के आएगा वो बात का बात है। अभी I'm just thinking about this iPad has questions that I'm going to ask you, but I don't think I've asked any of these questions written here because it's on the fly. Like I really want to take it on the flow, because my idea behind the podcast also is to chill out. Like not just talk about work. I want to bring out the real person more than the work that he or she is doing. Like my first question to you would have been, you've been on a lot of podcasts. What is something you've not spoken about before? And this is a question I've asked you. What is something that you've not talked about before online? And that I feel would be my USP on the podcast. Because if I get, say, a Shah Rukh Khan on, which we are manifesting, because in this podcast we have this manifesting kind of a thing where any big name comes up that I resonate with, we manifest that he or she will be sitting here on this couch and I'm going to be here, interviewing that person. So we've manifested a couple of people. We've manifested Manoj Bajpayee sir. I'm a fan. Oh, wow. I'm a fan. And मैंने दुआ छोड़ दी है वो अब हवा में, बस अब वो जब होगा बस होगा. I've manifested Harsha Bhogle sir, because I'm a big cricket enthusiast. Virat Kohli sir, MS Dhoni sir. So we have all these people that we will get some point in time. अब हो सकता है उसको 6 महीने लगे, 6 साल लगे या 60 साल लगे. But wish you the best on that. Thank you. So yeah. So the idea is to bring out that stuff that you've not spoken about before. So you've been on a lot of podcasts. I couldn't find any podcast where you were there. You were in a couple of them, I think. Yeah, small one. I started recently. Yeah.
But I'm compiling all the podcasts I am क्योंकि कम है in a link tree. ताकि अच्छे thoughts एक जगह मिल जाए लोगों मतलब time So yeah, what have you not spoken about before on other podcasts? I have not spoken about yet, and probably Have you sang on any other podcast? I've sang on one. Say no. On one. On one. I think so. Yeah, on one. Yes, Okay. on one I have. Okay. That was in Delhi with Sahil on his YouTube channel Intellectual Indies. Okay. So उसने मुझे एक छोटा सा गवाया था. ठीक है. चलो. Anyway. But you What know else? Moving on. the direction यहाँ पे जो Like a lot of direction people लिया है should. वो काफी अलग है तो हाँ. and I think that's the thing with podcasts, right? Like I have not spoken to anybody about a movie they're producing or ये जो हम लोग ने गेम चेंजर्स जैसी फिल्म बनानी है. Yeah. You know how जैसे आपने मैनिफेस्ट किया हम लोगों ने भी मैनिफेस्ट किया आपके पॉडकास्ट पे तो Yeah, we'll bring out these clips whenever things happen. Whenever things happen. Yeah. We're manifesting this on the 8th of April. Yeah. 2023. तो इसके बारे में तो किधर बात नहीं की और किधर भी कोई भी पॉडकास्ट पे कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया. अच्छा. So that would be a different one. What Along are with you. Oh, fantastic. What are your views on ChatGPT? Will this take away बहुत jobs or? आराम से मतलब जॉब जा रहे हैं. Inefficiency Inefficiency जा रही है. I don't think jobs जा रहे हैं. इनएफिशिएंसी जा रहे हैं नए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे इनएफिशिएंसी पक्का जा रहे हैं अभी ना 2-3 साल में ना मतलब व्हाट आई एम रीडिंग एंड लिमिटेड नॉलेज आई थिंक सबको लिमिटेड नॉलेज ही है इट्स कुछ हो गया है बट व्हाट आई एम रीडिंग व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग है इसकी बहुत केओस है चांसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होने वाला है ठीक है मतलब फ्रॉम chances of universal income has increased now. Different type of taxes will be introduced that will distribute wealth in a different way in society. तो बहुत chaos है अभी गवर्नमेंट में ठीक है and everything is speculation. But for sure जो mentorship business है या जो अभी 2-3 साल में ना we are like अभी जो निकला वो बेबी निकला है जो 2-3 साल में अभी जो निकलेगा वो बहुत I think humanity के लिए अच्छा ही है. What is the weirdest ChatGPT prompt you've given? Weirdest? My weirdest prompt is, will ChatGPT take jobs? Yeah, and it's given me like a list of jobs that it will replace. I asked ChatGPT if ChatGPT will replace jobs. And give me like a tabular format में मेरे को बताओ कि ये job. But मैंने वो देखा था उन लोग ने बोला कि ChatGPT will replace the writer. But the new job that will come out is the prompt engineering. Yeah, is the writer is a writer who knows how to write on top of AI. Prompt engineering. I think it's basically means fundamentally I think मतलब if human beings have to continue, then human beings need wealth to be redistributed to them. Course. So I think the nature of the job will change, but the job itself will not go away. Yeah, of course. But what's the weirdest prompt you've What's the weirdest prompt you've given on ChatGPT? Go for it. That tells me we have a lot of stories. यार actually we'll use this clip in the starting to create a hook. Like go for it. It's the chill hour. Just chill. बोल ही दो अभी आयुष जी. बोल ही दो यार ऐसा क्या? यार मैं देख रहा था कि कितना level of I was just messing around, ठीक है तो I was talking to someone and मेरे को joke चाहिए था situation पे. I was talking to some girl. Was this a Tinder? Not Tinder. Bumble. So I wanted, I was tired. Who would think इतने रात को तो I wanted some joke. No, you would, but then you resorted to I just ChatGPT. used it and it was good. It was good. And see down the line. So what was the prompt? Joke. Yeah, this is the situation. Pick up what can be the funny? Not pick up. I don't believe. What is the humor in this? यार मुझे humor पसंद है. मतलब humor के बिना मजा नहीं आता. तो we'll be good friends. Yeah, humor is very important. मतलब है ना. तो मेरे सारे जो दोस्त हैं कहीं ना कहीं है उनमें वो कीड़ा humor lens है. तो I'm a good audience also. तो चलता है. Good audience and good subject. Yeah, absolutely. So what was the prompt?
I don't remember, but मेरे दिमाग में ये अब हो रहा है तो अब बोल रहा हूँ exact मतलब याद नहीं। using ChatGPT लाइन मारने के लिए हाँ basically. एक ये हो सकता है। दूसरा ये मतलब Did that work? it works. It always works. If you are good with engineering, this If is you are good with prompts, prompt engineering. ChatGPT will work. It is very nice. But wait, आगे बहुत कुछ होने वाला है. I mean. अच्छा, you're talking about the future. I thought Oh you're my talking about God, yourself. like, भाई रुको, अभी रुको. This is just the tip of the iceberg. it's going. I was seeing कि कहाँ पे एक तो कुछ Tinder, ChatGPT का mix करके वो लोग क्या कर रहे हैं कि population का प्रॉब्लम हो रहा है ना, हाँ. कि population गिर रहा है. हर्षिल, this is very interesting. तो वो जो friction point होता है ना मीटिंग में, ये टाइम लगता है, get to know each other. Yeah. They are putting Tinder, GPT in that point ताकि ये friction और टाइम कम हो, ताकि लोग सीधे बच्चे बनाने लगे. बच्चे बनाए ताकि क्योंकि उसमें भी ना मतलब बहुत फ्रिक्शन है मतलब आजकल तो reducing that time. The mission statement of the company is to reduce the time to make babies, the process of natural babies using AI. Which company is this? I forgot its name. तो there are a lot of things there. तो अभी ये मेरे दिमाग में आया, अब बहुत कुछ चेंज होगा, बट ऐसे मतलब थोड़ा चंद दिमाग है तो Pockets of inefficiency निकल जाएंगे. हाँ. That तो I'm also pretty much bullish on. मेरे को देखना है कि ChatGPT कहाँ ब्रेक होता है, उनका थोड़ा privacy law रहता है. It's mentioned on ChatGPT that the information that they curate is on the basis of the data that they have till about 2019. ChatGPT 4. This is just ChatGPT. I'm not talking about GPT 4. 3 is till 2020. Yeah. 4 I think is updating. 2 साल के बाद we don't even know कि कहाँ जाएगा. मतलब कितना भी speculate कर लो, it's a new game. तो we are in a new rat race now. Good for me. I didn't have to learn so many things. I'm young. No, your dating game will be up for sure. Because when 2 years That down is the line, very small. 2 years down the line. Very small utility. So I think everything. No, but with the confidence that you mentioned, it works. It tells me that you've not just tried once. It tells me that you've tried a lot of times. Once. It tells me that you've tried a lot of times. And it has worked. No, the confidence with which you said कि नहीं, of course it works. यार. ठीक है, अभी बोल रहा है इतना टाइम नहीं है. नहीं सच्ची में मतलब I would lie, मतलब I have nothing to hide. वो used once and but it's very interesting. उनका privacy law है, ठीक है, बहुत सारे. You can't do jokes on certain things, ठीक है. तो but you can do jokes on certain things. तो you can prompt engineer in ways ताकि तुम उनसे वो security jail break बोलते हैं हम लोग कि वो हो पाए. I think that's fun to break AI, to break the boundaries, to unleash AI is fun. And humans ने उसमें ऐसे पिंजड़ा बना दिया है. I think we need Elon Musk वहाँ पे who will like free the. एक काफी है भाई. We don't बहुत need सारे any more. One is enough. Interesting. Ayush, what's the most expensive thing you own? डिग्री यार बहुत 5 साल ले ली लाइक पर टाइम इज मनी. 5 साल बहुत पैसा. आई थिंक डिग्री और आई थिंक लाइफस्टाइल जो अभी डेवलप हो गया है. आई कॉल इट एक्सपेंसिव क्योंकि टाइम लगा है मुझे इसको बचा के रखना है. मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन और ये. Interesting. What about you, Harshil? Are you impressed with that answer though? Are you impressed with his answer? इसमें मतलब इम्प्रेस नहीं कर रहा था. हाँ मतलब but the way the thought process is what I mean. Yeah, I think so. Yeah. What about you? What's the most expensive thing I own currently is shebang. Shebang. It's the most expensive thing I own. And if I'm talking about a object, then it would be my bicycle. Okay. कितने का है? कुछ लिया था सब कुछ कुल मिला के almost 1 lakh rupees का. This was when? 2000 ये आई थी 2019 में. Okay. That's a very interesting thing. मतलब as a friend I would like to highlight. I've been to his house. ठीक है. Rich family मतलब background is super good. Abundance is there. But आप इनके घर जाओगे ना, everything जो काम का है वही है. Minimalism. मेरा next question आपने. And minimalism and balance. हाँ. बहुत अच्छा है. I think 2 सूटकेस में पूरा एक साइकिल का भी एक सूटकेस आ गया. 3 सूटकेस में you can go anywhere. Pack his life, yeah. Actually, that was a goal I was trying to work with. कि how can I pack my
life into a minimal suitcase. तो recently मैं मेरी trip के लिए गया था 3 cities. I was London, Stockholm, Amsterdam. तो मैंने decide कर लिया था कि almost 15 days की trip थी. एक cabin luggage में I was able to pack my trip. One cabin luggage. Yeah. So what are the hacks? My next question, you actually sort of got it in the conversation. My next question was, what's the most useless thing you own? Oh, my degree. Took 5 years of my life. I'm joking. Grateful. I'm joking. I had to So joke. he's just trying to prove his pedigree in terms of humor. That's it. A useless thing. It's okay, you've answered. We'll move on. We'll wrap this episode. But before we do that, as per tradition, because I'm the host and I've been asking questions, I want you guys to ask me one question, and that's how we wrap the episode. I want to So, ask one you, question. what's the difference between Calcutta and Bombay? Oh wow, I can go on and on about this. I think it's a major culture shock for me, right from coming from east to west. So I have a very simple thesis that every city stands for something, right? Bombay, in a sense, amidst the chaos, media is something that pops up. Bangalore is where tech pops up, startups pop up, funding pops up. Calcutta is where dhanda pops up. Dhanda ban raha hai wahan pe. There is, if you have an established family business in Calcutta, you're gonna not want to leave the city. It's fantastic. It is cheap. The city is cheap. Rent is not that high. It is cheap. It is aspiration for people. मतलब per square around foot Calcutta. office कितने की होती है कैलकाटा में? यार मेरे को अभी exactly rent तो पता नहीं, but it is cheap. मतलब Approximately give or take. यार आपको मतलब रेसिडेंशियल पर्पस अगर मैं बताऊं तो आपको 15,000 में बहुत बढ़िया घर मिल जाएगा. Okay. बहुत बढ़िया घर मिल जाएगा. Okay, तो cheaper than Bangalore भी. Yeah. और office space? More or less. Okay. Because जैसे बैंगलोर का मैंने देखा है कि is roughly rental rate is 1/4 of Mumbai. Yeah. और तो कैलकाटा का क्या होगा? उससे कम होगा. उससे कम होगा. Okay. It will be say 1/5. Okay. Or 1/6 rather. Opportunity. Yeah. Big opportunity. और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं यहाँ पे? Yeah. It's very big on art. Very big on art. Very big on literature. Very big on folk music. Folk cinema. Very big. I was recently speaking to Manish Pandey, and he was recently in Calcutta. So he's like, "अरे दीपक क्या करना है इस शहर में?" बोला भाई कुछ नहीं है शहर में. आपको जो दिखाया जा रहा है आप देख लो. और कुछ नया देखोगे तो मेरे को बताना, मेरे को भी देखना है. क्योंकि I have not really like explored Calcutta. मतलब most सब लोग तो basically पार्क स्ट्रीट बोलेंगे. पार्क स्ट्रीट बोलेंगे या. But अभी ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है. I live in New Calcutta, which is Rajarhat, New Town. It's called New Town. So when we shifted, that was in 2008. So उस समय तो literally गाय भेड़िया थे वहाँ पे. Literally, like you could see cows and cattle just crossing road, and you used to like slow down your car to so that you can cross. अभी भी गाय भेड़िया, but in terms of people. कि वहाँ इतना ही भीड़ है, but अब गाय भेड़ी की जगह there's actually people, so many people there. But cultural shock ऐसा है कि Calcutta is more of धंधा oriented. तो अगर धंधा जो धंधा नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो Calcutta में नहीं है. खाना खा रहा है. स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है वहाँ पे. Street food is the best street food ever in Calcutta. बहुत अच्छा है. उससे बढ़िया स्ट्रीट फूड आप मतलब बॉम्बे तो कुछ नहीं है भाई. You take out this clip, you hate on it, do whatever you want. इंदौर वाले स्पेशली देखना है. Yeah, इंदौर जिसको जो देखना देखो भाई. I'm being दिल्ली वाले देखो भाई. मैं तो दिल्ली वाले को बोल रहा हूँ. इंदौर people are too Calcutta touchy. street food is the best street food. It is fantastic. वहाँ पे एक एग रोल का कोई दुकान है. आलू डाल के आप लोग एग रोल में मिला कुछ तो था. Kusum egg rolls is just here. Kusum rolls is just here. Oh, same egg. Same. Oh wow. The address is 37 Park Street, Calcutta. It's mentioned here on the banner. Bro, next level. फ्लोरीज भी अगर Flurries. अभी हर जगह पे आ गया है. Yeah. Flurries is there. Kusum rolls is here. फ्लोरीज का खाना बहुत अच्छा है. मतलब वो जो उनका डिजर्ट काफी अच्छा है. Yeah. It is fantastic. Food. फ्लोरीज also in Park Street. Yeah, Park Street. Yeah. Harshil has this mimic का skill set.
Can you mimic? अरे बाप रे बाप, he can mimic. Why have we not discussed this? Because like Because you did not ask my inner Bengali to come out. Oh! We are. Go for If it. you are going to Calcutta, you must visit Park Street, and you must eat. You must eat at Flurry's. You must eat at Peter Cat. You must order the fish at Peter Cat. It is very fresh, and Calcutta is beautiful city. You must really enjoy Calcutta. we'll give you a clip for life, okay? Please mimic Ankur Warikoo. अंकुर Go for it. Go for it. ये उड़ा रहा है मेरी. Go for it. You मेरे look को like बहुत- Ankur. हाँ, वही तो. You look like Ankur. बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट मारते हैं कि तो अंकुर वारिकू जैसा दिखता है, थोड़े इधर ग्रे बाल हो गए और बोलते हैं कि अंकुर वारिकू जैसा You दिखता look है. like yeah. The J Ankur Very Warikoo. much resemble Ankur. Go for it. नहीं हो सकता अभी वो एक्चुअली नेचुरली हूँ मैं, मतलब आई थिंक दैट आई टॉक अ बिट लाइक अंकुर वारिकू. नहीं नहीं. But, you have substance. No, he's saying you have substance. So go for it. Come Like just on, one Harshil. line maybe. No. Good way. क्या बोलूं? I have a I love mimicry you. video where I've mimicked Ankur. अच्छा you have? Yeah. Why don't you go first? You go first. So I'll feed off you. No, I haven't then seen that's her why in a I'm long not doing, time. no. I haven't seen her in a long time. I have one question to you. आपने Two States देखा है? हाँ, of course. हाँ, उसमें मेन एक्टर का नाम क्या था? अर्जुन कपूर उसके जैसा दिखता हाँ, है. दिखता है हाँ, ना? हाँ. आलिया भट्ट कौन है? I've heard. I've gotten this. Go for the Ankur Warikoo mimicry, no? One नहीं line. है, मैं अंकुर वारिकू ये मेरी उड़ा रहा है खाली फुकट. नहीं, Because बहुत सारे लोग तीन ऐसी चीजें मैं आपकी जो आपको लाइफ करनी में हर्षिल चाहिए. बन रहा हूँ. अभी आप रणवीर बनोगे. I'm joking. तीन ऐसी चीजें जो आपको करनी चाहिए. हाँ. अगर आप अपने 20s में हो. FDs में पैसे मत डालिए. पैसे इन्वेस्ट करिए. FDs में पैसे मत डालिए. That I don't know if I'm being able अच्छा to करते हो. like, but that is something that I've picked. You know, 3 things or whatever. ठीक है, आपका listicles. वॉइस मेरा चेहरा मिला दो, अंकुर वारिकू आ गया. Done. In fact, he commented on the reel. He's saying, "No, Warikoo was harmed in the making of this reel." But he's done who well. else can you? He's Yeah, we really love done him. well. Yeah. Please, मतलब, it's We with want love. him on the show also. Yeah. Yeah, should get it. Yeah. Nice. Who else can you mimic? Before we wrap up. We'll save that for the next time. Yeah. Yeah. थोड़ा मिमिक्री अभी आजकल बंद हुआ है. मतलब I used to mimic anyone and everyone. Yeah. But अभी I think almost 3 साल हो गए, ज़्यादा मिमिक्री हुई नहीं है. So with me, mimicry comes very naturally because I don't mimic people जैसे ऐसा well-known people. I mimic people around me. Yeah, same thing. Right? So my driver ji. Yeah. अरे बाबू करिएगा का? करिएगा. So I'll mimic him, and then I'll mimic one more driver ji used to be with us. So I'll mimic him. Then my friends who are around me. Yeah. Deepak क्या कर रहा है तू? अरे करते ना भाई. That is how some of my friends. So people around me know that I mimic a couple of people, and that's people around me. Not just not people who are well known. Yeah. or- So mine is the same, but established. for some reason it's reduced a lot Yeah. because I am very quickly able to pick up the nuances of people. Yeah. Yeah. And then It comes from very keen observation. yeah. So yeah, I'm able to do that. But off late, I'm doing it a little less. I'm consciously doing mimicry less because I've realized that people don't like it so much. Oh, people love it. People love it. No? Like Receiving the one end, people who you're don't like it. mimicking, they don't like it so much. Because then what happens that Been there. क्या होता है कि आप मिमिक्री करोगे, फिर मेरी एक बुरी हैबिट है मिमिक्री के साथ रेपिटेशन. मैं वो कंटिन्यूसली मिमिक्री करते रहूंगा और फिर आपको कुछ और नया तड़का डालना होगा ना, तो फिर मिमिक्री के साथ आप रेपिटेशन करोगे, फिर आपको नया तड़का डालना है तो आप कुछ ऑफेंसिव भी बोल डालोगे. तो दैट्स अ रेसिपी फॉर यू नो नॉट बीइंग लाइक सो मच. तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको थोड़ा बंद करते और बंद हो गया. आई थिंक 2-3 साल से ज्यादा की नहीं है. I've actually mimicked Sadhguru ji also. Well, you know, See, this is how it is. you must understand one thing, You must understand one thing. that Life. Sadhguru, Give him Take the life stage. as it goes. the universe is a big constellation, and within the constellation we are all the stars. Are you with me? Hello? Yes, no? Yes or no? What is this? Are you with me? No. Please, pranam, shat pranam to Sadhguru ji.
But this has been fun, Harshil and Ayush. This has been absolute fun. I hope you had a chill hour. It's We've been more than an hour. More than an hour. Yeah, but I hope. मेरा तो आउटरो वही है ना, तो मेरे को तो वही बोलना पड़ेगा. Chill hour and something. Chill hour. That's it. Chill hour. But yeah, thank you so much, guys, for taking out time and shooting this. Final thoughts on this camera, because this is focused on you. How did you like it? Honestly, बता देना जो भी है, बिंदास. Final thoughts on this camera, and then we wrap up. I met an actor today. You're talking about Harshil? He worked in 2 states, and he was funny. He was asking us question. I was like, "ये क्या चल रहा है आज?" But jokes apart, I hope he added value. Please do meditation. नई बात हो रहा है ये सब मार्केट में इतना, तो आप मेडिटेशन चालू करो, अपना एक सीक्रेट सॉस ऐसे निकालो और दुनिया में फास्ट आगे बढ़ जाओ. तो होप दिस मैसेज रीचेज यू एट राइट टाइम. मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे आइडिया आ गया. हाँ? इन अंकुर वारिको स्टाइल. आप रील के रीच को सोच रहे हो. मैं तो कंटेंट सोच रहा हूँ ना यार. मेरे को तो कंटेंट चाहिए ना भाई. मुझे मज़ा आया और well, you know. मुझे पता चला कि आयुष चैट जीपीटी लाइन मारने के लिए यूज़ करता है. आप वापस करो. मतलब कुछ नई चीज़ मिली मुझे सीखने को मेरे को फाउंडर के बारे में, और काफ़ी मज़ा आई. और या आई थिंक ऑल्सो प्लीज़ जो आप इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन जर्नी प्लीज़ ट्राई कीजिए लेवल सुपरमाइंड पे. और प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइबर बने ना बने दैट्स अप टू यू, बट डाउनलोड कीजिए और हमें फीडबैक प्लीज़ दीजिए, बिकॉज ग्लोबल इंडियन प्रोडक्ट हम बना रहे हैं इन दिस स्पेस, और हमें इस मेडिटेशन को 6 पैक जैसा कूल बनाना है, हर जगह को लेके जाना है दुनिया में. और आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ यूज़ इट एंड गिव अस योर सपोर्ट. एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस. Awesome. Thank you, guys. Please check out Level Supermind. It will take you to the next level for sure and make your mind a super mind. Thank you so much for watching. अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आपके पास भी बहुत टाइम है, तो आप भी before going please hit that subscribe button. I will link Harshil's and Ayush's inactive Instagram in the description so that we make it even more active from now on. But I'll mention their socials in the description. Go check it out. And thank you so much for watching. Have a good day. Cheers.